Hi, Sudhir here. In this video, I'm going to talk about Ayurvedic and modern perspective of nutrition and food. So, most of us are already familiar with the modern nutrition because modern nutrition is always in the limelight through advertised, through social media, or different news channels also. So, let's start with understanding the modern nutrition. And I'm not going to deep dive into the chemistry part of the nutrition. I'm going to highlight just the introduction part to set the context here. So I have one wheat grain here with me just to show you. Hope you can see this. So this is the microscopic view of wheat grain or wheat kernel, and the major part is starchy endosperm. इस part में majorly carbohydrate होता है और little bit of protein also. The second part is this one, and these layers contains fiber matter mostly along with vitamins and minerals. And this last part is the germ, which is a fat in the wheat grain, and water is distributed throughout the grain at minute level. So ये था grain structure. The thought behind this diagram is I want to know you that every food has this basic 6 nutrients: carbohydrate, protein, fat, vitamin, minerals and the water. और ये 6 nutrients से ही हमारी body बनती है, and this is like a fuel for your body. Now I'm going to tell you one short story. This is a story of nutrition policy of US, and why US is because US is the most affluent country. और जो भी US में होता है most of the developing countries में होता है, especially India's में वही trend आता है, may it be science and technology, fashion or nutrition or lifestyle. We just blindly follow the US and other Western countries. In nutrition also, we are following Western countries. So let's understand the story of US nutrition policy. In year 1992, in US, there was lot of cases of cancers and heart diseases, and that's how US government decided to launch the nutrition policy or the nutrition program for the whole country. और उसी के चलते उन्होंने फूड पिरामिड बनाया, जो पिरामिड एक बेसिक गाइडलाइन होगा for all the citizens and all the manufacturers of food throughout the country. और उस गाइडलाइन में बेसिकली 4 लेयर बनाए हुए हैं, और फर्स्ट लेयर है जो बेस लेयर है, उसमें मोस्ट ऑफ द कार्बोहाइड्रेट है. सेकंड लेयर इज फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, मीट प्रोडक्ट एंड मिल्क प्रोडक्ट, and the last one which is a very small amount, and that contains fats, oil and sweets. So this nutrition policy was basically designed based on low fat diet and high carbohydrate, especially complex carbohydrate diet, which are the partial truth. बट ये डाइट पॉलिसी उन्होंने चालू की यूएस में 1992 से लेकर 2004 तक ये न्यूट्रिशन पॉलिसी चल रही थी, और उसको स्टडी किया गया था कि क्या इफेक्ट इसका हो रहा है ओवरऑल पॉपुलेशन पे थ्रू आउट द कंट्री. उसका स्टडी किया गया था, एंड अप टू 2004 दिस वाज इन कंटिन्यूएशन. 1992 से 2004 तक लगभग स्टडी चालू था, और न्यूट्रिशन और फूड पैटर्न्स का लाइफस्टाइल और हेल्थ पर क्या इम्पैक्ट हो रहा है उसको स्टडी किया जा रहा था. फाइनली 2004 में यूएस गवर्नमेंट ने ये कंक्लूजन किया कि वो फूड पिरामिड की वजह से या न्यूट्रिशन पॉलिसी की वजह से ओबेसिटी इज इंक्रीजिंग इन द यूएस, एंड दैट्स व्हेन दे रिवाइज द फूड पिरामिड और उसको मॉडिफाई करके लो कार्बोहाइड्रेट बनाया गया और हाई फैट, स्पेशली अनसैचुरेटेड फैट, बिकॉज वो फैट बॉडी पर एक्यूमुलेट नहीं होता और ओबेसिटी का कारण नहीं बनता है. अनसैचुरेटेड फैट इन अ गुड अमाउंट एंड लो कार्बोहाइड्रेट डाइट, ये पॉलिसी को लेकर यूएस गवर्नमेंट ने न्यूट्रिशन पॉलिसी स्टार्ट कर दी. और ये था सेकंड फूड पिरामिड फॉर यूएस कंट्री, जो 2004 में चालू हुआ, और फाइनली 2011 में यूएसडीए, जो यूएस गवर्नमेंट का न्यूट्रिशन पॉलिसी देखता है, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, उस ऑर्गेनाइजेशन ने डिसाइड किया कि अब ये फूड पिरामिड को ही कैंसिल किया जाए, और उसकी जगह पर उन्होंने नया कॉन्सेप्ट निकाला, फूड प्लेट. बेसिकली न्यूट्रिशन को या फूड जो हम डे टू डे लाइफ में खाते हैं उसको 5 पार्ट में डिवाइड किया. फर्स्ट 4 पार्ट्स थे फ्रूट्स, वेजिटेबल, ग्रेन्स, प्रोटीन, और 5th पार्ट डेयरी कैटेगरी के लिए रिजर्व किया गया. सो दिस वाज ऑल अबाउट द फूड प्लेट एंड फूड पिरामिड. और आपने ऑब्जर्व किया होगा कि इंडिया में भी ये ट्रेंड कंटिन्यूस आते जा रहे हैं, स्पेशली लास्ट कुछ साल में कीटो डाइट का ट्रेंड आ रहा है, और उसी के साथ लो कार्बोहाइड्रेट का भी ट्रेंड है. तो ये न्यूट्रिशन ट्रेंड हमेशा आते रहेंगे, और ये मोस्टली
वेस्टर्न कंट्रीज को फॉलो करके ही बनाए हुए हैं, या वेस्टर्न कंट्रीज को ब्लाइंडली फॉलो करते हुए इंडिया में ये ट्रेंड्स को अडॉप्ट किया जाता है, और उसी की वजह से ये होल न्यूट्रिशन इंडस्ट्री सरवाइव कर रही है। सो नाउ द एसेंस ऑफ स्टोरी इज, ये सब न्यूट्रिशन ट्रेंड्स हमेशा चलते रहेंगे और ये हमेशा अपडेट होते रहेंगे, बिकॉज दे आर बेस्ड ऑन क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ फूड ऑन अ केमिस्ट्री लेवल, and they apply this trend or this nutrition policy for all the people, and that's why it failed. For some people it may work, but for most of people it will fail, because every individual is a different and unique in their biological and physiological aspect. Modern nutrition part is especially good for processed food industry, because all the nutritional claims and all the policies are important to monitor at processed food level, and it's good at that level, but it has a bad impact or a negative impact for day-to-day food consumption. Now let's see the second part of the story. The second part is going to be about Ayurvedic perspective of the nutrition. और इस पार्ट में हम कुछ बेसिक फंडामेंटल्स, बेसिक आयुर्वेदिक न्यूट्रिशन फंडामेंटल्स को देखेंगे, बिकॉज आयुर्वेदिक न्यूट्रिशन इज अ वास्ट टॉपिक, एंड आई वांट टू सेट द कॉन्टेक्स्ट इन दिस वीडियो व्हाई आयुर्वेदिक न्यूट्रिशन प्रिंसिपल्स आर इंपॉर्टेंट इन आवर डे टू डे फूड कंजम्पशन. So the first concept is 20 gunas or 20 qualities. Basically यहाँ पर 10 pairs है और 10 pairs से 20 qualities बनी हुई है. अब basically ये 20 qualities हर जगह पर apply होती है. हर जगह मतलब हर जगह. May it be food, person, environment, season, or even thoughts and emotions also. So all the things in the entire universe is affected by these 20 qualities only. And in this video, I'm going to tell you how these 20 qualities are related to the food and the human body. Now let's see further the relationship between guna and the doshas or the prakriti. According to Ayurveda, there are 3 prakrutis, vata, pitta, kapha. ये 3 prakrutis है. अगर आपने दोषा टेस्ट अभी तक किया नहीं है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाकर वहां पर टेस्ट कर सकते हो और खुद की बॉडी को एनालाइज कर सकते हो. अब जब भी गुनाज और क्वालिटीज की बात आती है तो अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा देयर इज अ वन रूल, एवरी अपोजिट क्वालिटी balances the quality. For example, if there is a dry quality in the person, so to balance the dry qualities in a person we need opposite quality. And what is the opposite of dry? Maybe oily or the liquid. So it works like that. So now let's understand the concept of qualities or the guna with one example. Suppose you are an obese person or overweight person. So according to Ayurveda, आपकी जो भी qualities होगी, physical और biological qualities, वो kapha category में आएगी. So now according to this table, let's see the qualities of obese person and how we can balance that qualities to become the normal person. The first quality is heavy. Now obese person is obviously heavy in the weight. So to counteract that, to control the heaviness in the body, we need opposite quality. And what is the opposite qualities of heavy? That may be light. And in this case, how can we balance? So we can have a light food or the food that are not very nutritionally dense. So having that food, we can balance the kapha qualities and we can control our weight. The second quality is slow. बेसिकली ओबेज पर्सन या ओवरवेट पर्सन थोड़ा स्लो होता है फिजिकल मूवमेंट में और मे बी एट द थॉट लेवल. सो टू काउंटरैक्ट दैट वी नीड अपोजिट क्वालिटी, एंड अपोजिट ऑफ स्लो इज अ शार्प. So obese person must be sharp in thinking. They need to actively think. On mental level, they need to constantly engage with the active and productive thought, and that can help to speed up their metabolism. Along with that, obese person need to have an active lifestyle physically. They need to exercise regularly. Whatever kind of exercise they can choose according to their routine and their suitability, but exercise is must for obese person. And that's how they can balance their weight, by balancing the opposite quality. That means opposite of slow, the sharp qualities physically and mentally. The next is cold. Now how can we balance the cold? So according to Ayurveda, the spices, the hot quality spices we can use in our day-to-day life, in our day-to-day food consumption, to balance the cold qualities of kapha. For example, ginger, black pepper, honey, all those spices have a hot quality in them and they can balance the cold qualities in a kapha person and help to reduce the physical body weight.
Now let's move further. Now this is the second concept in Ayurvedic nutrition, digestive system and taste relation. बेसिकली जब भी हम न्यूट्रिशन की बात करते हैं या हेल्दी फूड की बात करते हैं, पहला परसेप्शन हमारे दिमाग में यही रहता है कि मे बी सलाद फूड विथ bland taste or maybe plain foods, not a tasty food. But Ayurveda believes something different. According to Ayurveda, there are 6 tastes in a food, and that 6 taste has a very deep impact on your biological functions. And the second concept is potency or the virya. The third concept is digestive effect or the vipaka. Now let's understand all those concepts in a detail. So इस टेबल में 6 टेस्ट को डिस्क्राइब किया है. Sweet, sour, salty, pungent, bitter and astringent. These are the 6 tastes according to Ayurveda. And each taste has a different impact on Vata, Pitta and Kapha. बेसिकली ग्रीन एरो का मतलब है कि पर्टिकुलर टेस्ट उस पर्टिकुलर प्रकृति को बैलेंस कर रही है या कम कर रही है, और रेड एरो का मतलब है वो पर्टिकुलर टेस्ट उस पर्टिकुलर प्रकृति को बढ़ा रही है. Let's get back to our example of obese or overweight person. So as I said, in overweight or obese person there is increase in kapha. So here according to this 6 taste rule, we have to include pungent, bitter and astringent taste in the diet in order to reduce the kapha and help in weight loss. And this applies to all the health disorders and all health conditions. अब यहाँ पर और एक ट्रिक है. स्वीट टेस्ट का मतलब जनरली हम समझते हैं कि मिठाई या डेजर्ट या रेगुलर स्वीट, राइट? But according to Ayurveda, sweet is not just limited to the actual sweet that we call in a day-to-day life. But sweet का मतलब है all the grains, all the carbohydrate in the food. जैसा कि हमने wheat के structure में देखा था, carbohydrate is the major portion in the grain. So all the grains are fall into the category of sweet. All the pulses also fall into the category of sweet, along with other sweet foods like milk, dates, or actual sweets that are sugars. The next concept is potency or the virya. And potency is a sensation we feel in the stomach after having food, maybe 1 or 2 hours after having food. और potency के दो ही टाइप है, हीटिंग और कूलिंग. और अगर आपने कॉन्शियसली कभी देखा होगा या कभी ध्यान दिया होगा, तो every food has either heating or cooling effect on our body. As an example, you ate a fermented food, for example, idli or a dosa in the morning as a breakfast. और उसके 1-2 घंटे बाद आपके स्टमक में जो भी फीलिंग होती है वो हीटिंग फीलिंग होती है, and that's because of the virya or the potency of the food. Now in another example, if you ate a ripened apple, well ripened apple in the morning as a breakfast, और उसके 1-2 घंटे बाद जो भी आप स्टमक में फील करते हो, this is because of the cooling effect or the cooling effect of ripe apple, and it is called as virya or the potency in Ayurveda. And the third concept is vipaka or the post-digestive effect. The final post-digestive effect of the taste on the body, mind and consciousness is called as vipaka, and vipaka is specially felt in the lower abdomen or the intestine because it is after the digestion of food. So हमने देखा था there are 6 taste और 6 taste के 3 ही vipaka है. For example, sweet or salty taste gives sweet vipaka. Sour taste gives sour vipaka. Pungent, bitter and astringent taste gives pungent vipaka. इसको एक एग्जांपल के साथ समझते हैं. फॉर एग्जांपल, आपने लंच में कुछ स्पाइसी मील किया है, कुछ स्पाइसी आइटम खाया है. नाउ ऑब्जर्व योर फीलिंग एंड सेंसेशन इन स्टमक थ्रू आउट द डे. You will feel little hotness in your stomach, especially in your lower abdomen after some time. And most probably you will feel hotness till your next morning. And that's because the effect of vipaka of food on your body. Moving ahead, the next concept is prabhava or the exceptions. आपने स्कूल में शायद एक्सेप्शन के बारे में पढ़ा होगा. केमिस्ट्री में मोस्टली एक्सेप्शन होता है. एक्सेप्शन इज लाइक abnormal qualities. And the best example is mercury. Mercury is a metal, but वो normal state पे, normal room temperature पे, वो liquid की state में रहता है, which is not a normal thing, because all other metals are solid at the room temperature, and mercury, in spite of having in the category of metal, it is liquid at a room temperature, and that's the good example of the exception. Now, in Ayurvedic term, when two substances of similar taste, energy, and post-digestive effect shows entirely different action,
this is because of the prabhava or the exception. For example, जैसा हमने last slide में देखा था, lime is a sour in taste and sour taste gives sour vipaka. But जब भी हम नींबू पानी पीते हैं, हमें cooling feeling होता है, पेट के अंदर हमें cooling sensation होता है, and this is because of the prabhava. The second example is honey. Honey is a sweet in taste and sweet taste has a sweet vipaka, but this is exception and honey gives the hot vipaka in your body. और इसी की वजह से most of the weight loss program include honey in them. So this was the introduction of modern nutrition and Ayurvedic nutrition. And now I'm not telling which nutrition or which nutrition perspective or nutrition aspect is a better. Both the nutrition aspect has their own place. For example, अगर हम प्रोसेस फूड की बात करते हैं, न्यूट्रासिटिकल फूड की बात करते हैं, तो मॉडर्न न्यूट्रिशन इज मोर परफेक्ट बिकॉज दे मेजर एवरी फूड ऑन क्वांटिटेटिव लेवल, ऑन एनालिटिकल लेवल. दे मेजर calories in food, carbohydrate, protein, fat, or vitamin minerals in the food, and it's needed legally and ethically in processed food. But when it comes to nutrition at home, no one can beat the Ayurvedic nutrition because this aspect or these fundamentals are more qualitative approach, and it is based on certain fundamental principles that are not going to change forever. And that's the best thing about Ayurvedic nutrition. And Ayurvedic nutrition is not like a rocket science. It's a very simple. What we need is awareness and understanding of the basic principle of Ayurvedic nutrition. If you understand Ayurvedic nutrition, you can easily follow them at home. And I wish every home can start following Ayurvedic nutrition in their home, and it all start from your kitchen only. So having said that, I'm Sudhir Suryamshi signing off. See you in the next video.